beginning of a very good turnout, and I expect last time in 2012 there was a 84% voting. It may even exceed 84% this time. Goa votes very heavy, and this is one of the speciality what BJP has inducted into the politics of Goa to increase the voting. Last time we managed to get it to around 84. This time we may be able to get even crossing 85. Initial indications are good. As far as I am concerned, we are concerned, BJP expects mandate with 2/3 majority. So there is a fourth corner fight this time. So there is the BJP fight this time. You think that there will be cutting of votes? It's an anti-incumbency vote. Who told you? Traditionally, pollsters say that a large turnout is, which is what happened in 2012. Your pollsters are saying that it is BJP majority. Everyone is predicting 22 to 25. Okay, Mr. Parikar. So you agree with it's the a four-corner seat. I'll get better than that. It's a four-corner contest this time, and three corners are very weak. Yeah, but there is an alliance of MGP, Shiv Sena, and Goa Suraksha. I think you have not gone around in the state to find out. Right. Except for 4-5 seats, they don't pose any threat. So will you come back to Goa? Will you come back to Goa? Mr. Parikar, do you see the Aam Aadmi Party as a factor in Goa, sir? I said 4-corner contest. I will not talk about other political party. Said 3 corners are very weak. So will you? मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में पिछले इलेक्शन के जैसा काफी हेवी वोटिंग होने वाला है. 85% तक होने वाला है. बीजेपी ने हर एक वोटर को 3-4 बार कांटेक्ट किया है. पीपल आर वेरी एंथुजियास्टिक. बहुत लोगों में जोश है वोट करने का, और वो भी एक अच्छी सरकार को उसका सर्टिफिकेट देने के लिए लोग बड़ी संख्या में बाहर आएंगे, और लोग हमें कम से कम 2 सर आप सबसे बड़ा चेहरा है, आप आ रहे हैं, आप सबसे बड़ा चेहरा है गोवा में. इस बार भारतीय जनता पार्टी मेन फोकल पॉइंट है, और उसके अराउंड सब कुछ घूम रहा है. आम आदमी पार्टी मैं दूसरे पार्टियों के बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कहा है कि ये बार बीजेपी सेंट्रल फोकल है, और दूसरी पार्टियाँ उसके अराउंड जो कुछ करना है वो कर रही हैं. We will get 2/3 majority. If anyone gets 2/3 majority, what is the reason why he should think of an alliance? Okay, sir. इसके बारे में आपको अमित जी ने कहा है, मतलब जो कहा है वो उतना ही मैं वापस रिपीट करूंगा, और कुछ नहीं. अमित जी ने तो आपका नाम ही बोल दिया है उन्होंने. अमित जी ने तो आपका नाम बाइट रहेगा, और आपके पास शॉर्ट रहेगा. I have not commented anything. I am a party man. What let party decide. But sir, you said that you like Goan fish curry more than that of butter chicken, and you will prefer Goan fish curry any time possible. So what See, I have lost about 4 kg in Delhi. The main reason is food. Is this an indication that you will be the next? I have not said anything. I said that मुझे गोवा का खाना अच्छा लगता है. आपको उससे जो मतलब निकालना है आप निकालो. Sir, Amit ji has said that you can. It is a possibility that you can become a chief minister. Amit ji has said. वो आप उनके शब्द में से जो निकालना है निकाल दीजिए. Party leadership does decide. Will you return, sir? No, मैं आपको बोला कि आई एम पार्टी मैन, सो इशू. सर अगर लीडरशिप ऐसा क्या कारण रहा कि आप उसके ऊपर और ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता. सीएम तो वही है. So he will continue in the next term as CM. प्रचार में There was some criticism from the opposition on क्या that. कारण रहेगा आपको काम करना पड़ा यहाँ पे? मुझे एक आप बताइए, प्लीज यार. कैंपेन करना कुछ गलत काम है क्या? इलेक्शन डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी में इफ यू फॉलो ऑल द लॉज प्रॉपर्ली एंड द गाइडलाइंस, यू कैन कैंपेन. सर आप यूपी के एमपी हैं. सर की डिफेंस मिनिस्टर है, आपको दिल्ली में रहना चाहिए, यहाँ पे आगे प्रचार. क्यों? You were here for an extended period. Like Shiv Sena says that, sir. Shiv Sena said that. सर आप यूपी के एमपी हैं, वहाँ भी जा रहे हैं. आप यूपी से एमपी हैं. मंत्रालय पर उत्तराखंड में जाऊंगा, यूपी में जाऊंगा, मुंबई के म्युनिसिपल पोल में जाऊंगा, सभी जगह जाऊंगा. सर आपकी पार्टी तो केजरीवाल और उनके मंत्रालय पर सवाल खड़े करती रही, क्योंकि वो पंजाब और गोवा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो आप भी तो कर रहे थे सर वही चीज़.
गोवा मेरा होम बेस, आई एम नॉट ऑब्जेक्टिंग और आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन फॉर गोइंग टू हिज होम बेस एंड कैंपेन। तो मैं तो किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता। सर एक और बात है सर, हर एक का फंडामेंटल राइट है, उसके ऊपर मैं क्यों? सर एक और बात है, जो ब्राइबरी कमेंट को लेकर जिस तरह से नोटिस भेजा गया था इलेक्शन को, कहीं ना कहीं आपको लगता है वो इफेक्ट रहेगा सर? इसका जो इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस भेजा था, आपने कहा था ना, मेरा बयान पढ़ा नहीं, सुना है? सुना है। हाँ जी। आई हैव पुट अप अ क्वेश्चन मार्क, विल यू वोट by taking 2000 rupees? That is my question mark. Konkani में one word, marap is a question mark and mara is a do. I have put up a question, will you vote for money? Sir, have you replied the same? 1 minute, I have replied. But if you listen to the CD very carefully and ask some person like Prakash Kamath or someone who is reporter here who knows Konkani, he will tell you I have raised a question mark indicating that you should not vote for money. आपको लगता है इलेक्शन? One minute. By changing one word, you don't change the meaning of the. तो इलेक्शन कमीशन ने आपकी बात को समझा नहीं, ऐसा कह रहे हैं आप? मैंने वो लिखा है ना उनको ऑफिशियल। सर कहीं ना कहीं मैं उनको कहा है कि आपने मुझे जो कागज़ दिया है उसके ऊपर ऑथेंटिकेशन भी नहीं है और 1 तारीख को ये करते हैं, पहले वेबसाइट पे डालते हैं और बाद में रात को 9:15 बजे इधर इलेक्शन मीटिंग, वो भी मैं फ़ोन करने के बाद मुझे डिलीवरी होती है। हो गया सर, कहीं ना कहीं ये मतदानों के लिए कुछ उनको फर्क पड़ेगा सर? गोवा के लोगों को ना म्हाका दिसता वोटींग टर्नआउट ह्या वेळार सगळ्यांक चड जातलीशी दिसता म्हाका, कित्याक आमी 5 वर्सां 2007 ते 2012 काँग्रेसीचो सरकार पयलो, स्थिर सरकार आशिल्लो पूण खूब करप्शन केलें, लोकांनी वेटून 5 वर्सां BJPक दिली, तोय स्थिर सरकार आशिल्लो पूण तातूंत आनिकूय करप्शन जालें। सो ह्या वेळार जर आम आदमी पार्टी नाशिल्ली जाल्यार हांव म्हणूंक शकतालो की वोटींग खूब कमी जातलें आशिल्लें, कित्याक लोक वाजेल्या वोटींग करून कांयच फरक पडना अशें दिसतालें, पूण आज आम आदमी पार्टी सारको पर्याय आसा आनी आय एम कॉन्फिडंट की ह्या वेळार सगळे रिकॉर्ड ब्रेक जातले वोटिंगाचे। तुमकां ओवरऑल कितें दिसता तुमचें? सॉरी, ओवरऑल कितें दिसता तुमकां गोवा? वॉट आर द नंबर्स? ना, जशें आमी एक इंटरनल सर्वे केल्लो तातूंत आमकां 42% वोट शेअर आमी एक्सपेक्ट करता. दॅट वॉज अप टू 29th जानेवारी आनी इट वॉज ट्रान्सलेटींग टू 24 सीट्स. पूण जशें सांगलें आमकां जर दिल्लीच्या इलेक्शनाच्या पयलीं सांगिल्लें तुमचे कितले सिटान स्ट्रॉंग आसा, आय वूड नॉट हॅव सेट 67 out of 70 सीट्स. लास्टाक लोक आपल्या काळजान जे आसा तातूंच्यान वोट मारता आनी आज आम आदमी पार्टी सारको पर्याय आसतकूच म्हाका दिसता जशें म्हळें वोटींग पर्सेंटेजूय वाडटली आनी आम आदमी पार्टीचो वोट शेअरूय वाडटलो. Get in touch with the voters, and as I said, my campaign is very clear. I know your problem, I have the solution, and I am able to deliver. That is basically my I have gone around the constituency himself, and it clearly shows, as far as the youth are concerned, are totally disillusioned with Mr. Parrikar. For he was the chief minister thrice, but as far as employment is concerned, there was 15,000 jobs which was for grads in different categories in these 5 years. And what Parrikar gave for the city of Panjim is just handful. So that is one of the major resentment as far as the people. You have 17 councillors with you as far as the city is concerned. Yeah. How do you look at your victory in Panjim? No, everyone basically chipped in or supported. We worked as a family, and basically it was more of a fun and less of a campaign. So we enjoyed the campaign. I wanted votes from all sections of the society as far as Panjim is concerned. And where Congress, I thank the Congress for supporting me. As far as the scenario is the elections are concerned, the most important thing is employment. And that was the plank what we have for this election for and development. The people of Panjim will tell you what they have seen in the past 23 years. Maybe Parrikar may be making tall claim that he has done nothing as far as Panjim is concerned.
to say. There's garbage problem. There is no cooperation as far as the present MLA is concerned with the CCP. The functioning of the MLA is hardly anything actually in Panjim. It is more where the CCP is concerned. So these people should basically work in tandem. So nothing that sort has been happening. One final question. I don't know what, I cannot comment on what they have got to say. I am very clear. My conscience is clear. I have got the support of the voters. That is more important. Money doesn't play a major role as far as politics is concerned. Maybe 10-15% here and there. Maybe for the floating votes which you see. But otherwise money plays no role. And especially in Panjim, I don't think money plays any role. And you haven't exercised the use of money power? I think hardly we have spent must be around 8-9 lakhs rupees. Actually, I think they've been bribing of voters. No, at least, is there any allegation against me? I don't know. Or is there any complaint filed against me? That also I don't know. Thank you for speaking. रिस्पॉन्स भारतीय जनता पार्टीक मेळ्ळो तातूंतल्यान अशें दिसता की गेल्या फावटी जी मेजॉरिटी मेळिल्ली ताचे पेक्षा कदाचित 1-2 सिटां निश्चितपणे जास्त मेळटले कारण जे जाग्यार आमी गेल्यात त्या जाग्यार म्हणजे तशें खंय तरी पार्टीच्या विरोधांत रोश आसा जावं आनी कितें अशें ना ते उमेदीन सगळ्या जनतेन उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद दाखयला त्यामुळे अशें दिसता की मेजॉरिटी क्रॉस करून भारतीय जनता पार्टी परत गोंयांत सत्तेर येता सेंट्रल लिडरशिपांतल्यान एक मेसेज येता की सेंट्रल लिडर आमी गोंयांत धाडटले एज अ CM म्हणून तुमकां कितें दिसता शेवटी कितें आसा लिडर ठरोवपाचें जें काम आसा जे निवडून दिल्ले आमदार त्यांनी करूंक जाय आनी तातूंत सेंट्रलाचें सहकार्य सगळ्यांक बरोबर घेवन अशें जावंक जाय त्यामुळे निवडून दिल्ले आमदार कितें करतात ताजेर अवलंबून तांकां कोण हें जाय हें ते ठरोवन सेंट्रलाक सांगतले सेंट्रल आपलें तातूंत सहकार्य निश्चितपणे दितले त्यामुळे आत्तां ताजें कितें भाकीत करप हें तशें बरोबर न्हय सेंट्रलाक मिनिस्टर आसा सो या तुमकां जर एक वेळ धाडले जाल्यार तुमी आमी सगळे हांगसरले भारतीय जनता पार्टी कितें ते जाणात आमी सदांच म्हणटात की आमी पार्टीचे शिस्तबद्ध सैनीक अशा पद्दतीन पार्टीचें काम केलां आसा आनी जी जी जबाबदारी आमची ती जबाबदारी योग्य पद्दतीन आमी पूर्ण केल्या कदाचित तांच्या मनाक आयलें तर ते ताजी जी आज्ञा ही श्रीसामान्य मानूंक जायी आनी त्या पद्दतीन काम आमी निश्चितपणे आमचें करतात तुमी आयज पणजे कॉन्फरन्सीक वोट केला पणजे कॉन्फरन्सी प्रेस्टिजियस जाल्ली आसा कित्याक बाबूश ज्या कॉन्फरन्सीक इलेक्शनाक रावला त्या कॉन्फरन्सीक निवडून येयला पणजे कॉन्स्टिट्युन्सी ही कंटिन्युअस जवळ
1994 पासून भारतीय जनता पार्टी कडेन आसा आनी त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाचें काम जो उमेदवार भारतीय जनता पक्षाचो आयलो मनोहर पर्रीकर आसतले मागीर सिद्धार्थ कुंकळकर आसतलो हे उमेदवार हे पार्टीच्या जोराचेर आनी संघटनेच्या जोराचेर येयल्ले आसात आनी त्यामुळे पणजी मतदारसंघ हो भाजपाचो भालय किल्लो आनी तो तसोच कायम उरतलो अशें म्हाका दिसता. प्रियोळ मतदारसंघ तुझ्या उत्तर गोंयांत पडटा. प्रियोळात तुमचो भाजपाचो कॅन्डिडेट उबो ना, तुम्ही सपोर्ट केला गावडे, त्या संदर्भात तुमचे सांगपाचें ना. शेवटी महाराष्ट्राची गोमंतक पार्टी आमच्या बरोबर आशिल्ली, त्या मदीं कोएलिशन तोडून गेले. तांचे इच्छा आकांक्षा सगळ्यांक आसतात, तांची इच्छा ही त्यामुळे ते गेले. त्यामुळे ते आमचे बरोबर ना. ह्या हातूंच्यान आमकां ते आमचो कॅन्डिडेट निवडून हाडचो म्हणजे अशें दिसलें की वोट डिवायड जावन परत एमजीक थंय चान्स पडूंक जायना आनी म्हणून आमी गोविंद गावडे हो निवडून येवपी कॅन्डिडेट आहा ताका आमी सपोर्ट केला. कितले सीट तुमकां दिसता? जितली आंकडो सांगपाक मुश्कील, मेजॉरिटी निश्चितपणे क्रॉस करतात हें म्हणपाक हरकत ना. ते 21 ते 26. 21 ते 26 प्रत्येकान हें वेगवेगळें आसता न्ही, आकलन वेगवेगळें आसता. आमी मेजॉरिटी धरून 26 पर्यंत निश्चितपणे वता.